सो आज आम एटॉमिक फिजिक्स किछटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा एटॉमिक फिजिक्स सो जोटा प्रॉब्लम पाई हेल्पफुल हम। सो फास्ट कॉन्सेप्ट जोटा डिस्कस करवा दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। से रिलेटेड कौन प्रॉब्लम आसे से रिलेटेड तुम प्रथम कॉन्सेप्ट जोटा आसे सेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो प्रॉब्लम आसे कौन आसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ए रिलेटेड प्रॉब्लम आसे। सो ए प्रॉब्लमटा कौन ए एक्सप्लेन कराई एक्सप्लेन इट अगेन। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट तुम जानती गोटे अल्फा सोर्स नि जाए जोटा जाकि गोल्ड फॉइल स्ट्राइक करे और डिफरेंट एंगल स्कैटर्ड करे। वेरी फ्यू जो मैंने मोर देन 90 डिग्री एंगल स्कैटर्ड करती वेरी माने प्राय एवरी पार्टिकल ऑलमोस्ट एवरी पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। सो वेरी लेस जो मैंने स्कैटर्ड हुई आ वेरी 1 in 8000 केस हुए जो पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन हुए। सो वी आर कंसिडरिंग द हेड ऑन कोलिजन माने जो विभिन्न पॉसिबिलिटी भितर वी आर कंसिडरिंग द हेड ऑन कोलिजन पॉसिबिलिटी। हेड ऑन कोलिजन माने कौन अल्फा पार्टिकल लेफ्ट साइड रू आसला अल्फा पार्टिकल लेफ्ट साइड आसिक न्यूक्लियस को अप्रोच कला न्यूक्लियस को अप्रोच कला से गोटे डिस्टेंस रे आसिक रही जाइथिबो माने न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल माने कौन अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस माने जार मास नंबर 4 चार्ज नंबर 2 आउ से अल्फा पार्टिकल चार्ज है +2 e दैट इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो गोटे अल्फा पार्टिकल जब लेफ्ट साइड रू अप्रोच करुच्ची माने सोर्स रू अप्रोच करुच्ची आ गोल्ड फॉइल रे थिबा एनी आटम को आटम सहित स्ट्राइक करुच्ची हेड ऑन कोलिजन करुच्ची तो आट ए डिस्टेंस r0 रे से स्टॉप हो बिकॉज ऑफ रिपल्सन। सो आम यही एट दिस मोमेंट वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला जितेबाला अल्फा पार्टिकल इज एट रेस्ट। सो इनिशियली अल्फा पार्टिकल खाली काइनेटिक एनर्जी थी देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज अल्फा पार्टिकल सोर्स रू बाहर पर खाली तार काइनेटिक एनर्जी था देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी देयर। सो आम अप्लाई करवा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। सो टोटल एनर्जी इनिशियल केते हबो ना टोटल एनर्जी है तुम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से भाया टोटल एनर्जी फाइनल कौन हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल आउ पोटेंशियल एनर्जी। तो थिंग इज दैट तमरा इनिशियली देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी सो दिस बिकम 0 सो ओनली काइनेटिक एनर्जी रहिबो इनिशियली फाइनली देयर टू इट कम्स टू रेस्ट सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी फाइनल सो ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहिबो and this potential energy is particularly your electrostatics potential energy. This potential energy your electrostatics potential energy. So by applying this so we have result. Let me write again. So tell me what is the kinetic energy initial? Kinetic energy initial is be mass of alpha particle and velocity of alpha particle the square. This is the kinetic energy initial and that no there is no potential energy so is equal to potential energy 0. So this part is 0 only kinetic energy part is there and RHS re kon habo RHS re there is only potential energy no kinetic energy and potential energy that too electrostatic potential energy. So electrostatic potential energy formula है 1/4πε0 Q1 Q2 by R Q1 80K alpha particle Q2 80K nucleus divided by R 80K ना R0 जोटा distance of closest approach। ये फार्मूला तुम पढ़ो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एटा चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r हेले व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। फार्मूला कौन 1/4πε0 फार्मूला मन रखता पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R ये R टा R0 नहीं तो R0 लिखी। सो दिस पार्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4πε0 एटा मल्टीप्लाई कले केते हबो 2ze² by R0। सो एम्प्लाइज R0 केते हबो R0 हबो
1 by 4 pi epsilon naught 2 Z square by kinetic energy of alpha particle. Okay, so R0 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 Z square by kinetic energy of alpha particle. So this is your formula. So whenever you have to you are pachari thiba jodi find the distance of closest approach, so you have to use this formula. So 1 by 4 pi epsilon naught 2 Z square by kinetic energy of alpha particle. So only you need, because this is a gold foil experiment, so Z is here 79, so gold ପାଇଁ Z हबो तमर केते 79. So finally हमें ए फॉर्मूलाटा पाइले distance of closest approach रो, okay, which is R0 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 Z square by kinetic energy of alpha particle. So जदि kinetic energy of alpha particle तमे जानिल तो आराम से distance of closest approach पाई परिबो. ओके, अब इट इज Z टा हला एटॉमिक नंबर, आ गोल्ड फॉल पे एटॉमिक नंबर हला 79, सो इट इज Z जगह 79 पके परिबो, बिकॉज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे गोल्ड फॉल नहीं आइतला. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ alpha particle. Most of the, you can see most of the alpha particle can undeviated की pass करचंदी. Very few particle, actually few particle greater than 90 degree deviate होचंदी, and 1 in 8000 particle 180 degree रे deviate होचंदी. and ये 180 degree रे जो deviate होची जो alpha particle सही केसटा को नहीं कि हमें study करचे और सेतिरो ही हमें बाहर करचे distance of closest approach. So इटी बेले बेले कौन हुए distance of closest approach पचारती हो kinetic energy of alpha particle देती हो in terms of mega electron volt. mega electron volt माने कौन 1 mega electron volt है 10 power 6 eV मन रखता हो 1 MeV है 10 power 6 eV. पुनी eV केते ना 1 eV है 1.6 into 10 power minus 19 joule. ओके, 1 eV है 1.6 into 10 power minus 19 joule और 1 MeV है 10 power 6 eV. EV is the unit of kinetic energy. Remember that. Generally, kinetic energy of alpha particle mega electron volt रे देथिबो बा electron volt रे देथिबो. Joule और electron भितर relation है mega electron volt है 10 power 6 eV. If you use this information, you can easily do the distance of closest approach problem. Okay. So आज हम पढ़िबा atomic physics रो एक बहुत important concept that is known as atomic physics रो important concept that is Bohr's model. आम 19th रू पढ़ुचे बोर्स मॉडल. सो से बोर्स मॉडल रिलेटेड आम कॉन्सेप्ट आज पढ़ा. ओके, सो बोर्स मॉडल रे देयर आर मेनली 5 पोस्टुलेट्स आर देयर. 5टा पोस्टुलेट्स अच्छे. लेट मी डिस्कस दैट पोस्टुलेट्स. बोर्स मॉडल है मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल रे देयर आर सम लिमिटेशंस, दैट्स व्हाई बोर्स मॉडल कम्स इन टू द पिक्चर. ओके, so first postulates of the Bohr's model is all the central part of an atom is called nucleus. Is called nucleus, and the nucleus contains whole of the positive charge and the whole of the mass of the atom. Okay. Next postulate is electron are capable of revolving around in a certain fixed orbit. Certain fixed orbit which is known as stationary orbit or permitted orbit. Third point है as electron revolving around a orbit they possess angular momentum, and that angular momentum is equal to mvr is equal to nh by 2 pi or integral multiple of h by 2 pi, where h है Planck constant, n है orbit number जोटा 1 2 3 so on. it m है mass, v है velocity, r है radius. Okay, so electron जितेबाला orbit रे बोलचंदी they possess some angular momentum जोटा को आउची mvr. Can angular momentum mechanics रे हम पढ़ते हुए mvr and that is equal to nh by 2 pi. So जदि तमे 1 पकेलो h by 2 pi, जदि 2 पकेलो 2h by 2 pi, जदि 3 पकेलो 3h by 2 pi एमते हो. So जदि तमे orbit जानचो, you can easily calculate the angular momentum by knowing the value of n. It is always integral multiple of h by 2 pi. Next postulate है as electron are present in different energy levels, they can transit from higher state to lower state. डी एक्साइटेड तक आ जाए. एक्साइट हेले लोअर स्टेट टू हायर स्टेट जीवे. डी एक्साइटेड हेले हायर स्टेट टू लोअर स्टेट को आसीबे. हायर स्टेट टू लोअर स्टेट को आसीबे. ड्यूरिंग दैट हायर स्टेट टू लोअर स्टेट को जतले ग्राउंड स्टेट को आसीबे
इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट को आसीबो दे गिव्स ए पल्स and that pulse having energy hf and that hf is equal to e2 minus e1 and that hf is equal to e2 minus e1 and energy of the second orbit minus energy of the first ground माने एटा हला energy of the excited state and energy of the ground state. Okay, तापरे हला all the laws of mechanics are valid when electron in the stable orbit. Laws of mechanics valid haba जेतले electron in the stable orbit, but it's not valid when electron are in transition. Okay, Bohr's model पढ़ते Bohr's model रे हमें कौन सिखिले ना the modified Rutherford model is the Bohr's model. The central part of the atom is called nucleus, which contains whole of the positive and whole of the mass of the atom, and electron are revolving in a circular orbit. Those orbit are known as stationary orbit or permitted orbit. As they move in a circular orbit, they possess angular momentum. That angular momentum is equal to mvr is equal to nh by 2 pi, where h is a Planck constant, and Planck constant value is 6.63 into 10 by minus 34 joule second. Joule second is the unit, and n is the orbit number. It is 1, 2, 3, and dot so on. And electron, while in the orbit, they can transit from higher state to lower state by gives a pulse or radiation, as a radiation energy hf, and that is equal to difference of the energy levels, that is E2 minus E1, where E2 is the energy of the higher orbit and E1 is the energy of the lower orbit. And all the laws of mechanics are valid when electron in the stable orbit, but they are not valid when electron are in transition. These are the summary of Bohr's model. Now they have different energy levels, that is N1, N2, N3 and so on, and this is the picture of the atom. This is the nucleus and electron is revolving in the orbit. They must have some radius. That radius is known as Rn. Rn means radius of nth orbit. So as electron revolving in orbit, they must have some Rn, means radius of nth orbit. They must have some orbital velocity, and that is known as Vn, that is known as velocity of nth orbit. They must have some total energy, that is known as En, and that is energy of nth orbit. And they must have some frequency, that is known as Fn, and they must have some time period, that is known as Tn. कहीं टाइम पीरियड थी कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करछि माने दे वन कंप्लीट रोटेशन पे जते टाइम लगे, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो दे मस्ट हैव सम Tn, that is time period. And as time period is there, they must have frequency, because frequency is 1 by time period. So this is the nth orbit time period, this is the nth orbit frequency. Okay, we can obtain this equation Rn, Vn, En, Tn, Fn by using two simple equation. One is let me write by we can derive this Rn, Vn, En and Tn, Fn by two equation. First equation is your Cpf is equal to Cf. Cpf is equal to Cf माने centripetal force is equal to Cf, Coulombic force. As electron orbiting in a circular motion, they must have some centripetal force. That centripetal force is equal to mv square by r, and Coulombic force है तमरा k जो k q1 q2 by r square, E and q2 माने ze by r square. So that will be mv square by r k ze square by r square. This is the equation number 1, and equation number 2 is your this is the equation number 1, and equation number 2 is from the Bohr's postulates. From the Bohr's postulates we know mvr is equal to nh by 2 pi, angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. By playing with these two equation 1 and equation 2, we can derive Rn, Vn, En, Fn and Tn. Okay, we'll discuss. So as we discussed in the previous video that when electron revolve around in a orbit, around the nucleus in a orbit, they must have some Rn, Vn, En and Tn and Fn. So here is the formula that we derived from the equations 1 and 2. So by playing with the equation 1 and 2, as we discussed in the last video, we can find Rn, Vn, En, Tn and Fn in this form. Okay, so Rn is n square s square epsilon naught divided by pi z me square. As here, apart from n and z, n is the orbit number, z is the
atomic number, all other things are constant. By putting the value of these constants, Planck constant, absolute, that is also a constant, pi, that must have some value, m means mass of electron, E means charge of electron. You can place all the constant value, you can get easily the numerical formula 0.53 Armstrong n square by z. So it is very easier while doing the problem of Rn. So radius बाहर करिया पे हेले radius of nth orbit आमे यही फॉर्मूलाटा मन रखिबा जोटा बहुत यूजफुल हबो जेतेबेले प्रॉब्लम करिबा radius related, where 0.53 Armstrong is the Bohr's radius. Remember that. Here n is the orbit number, as z is the atomic number. Orbit number means n1, n2, n3, n4, so on, and z means your atomic number, which hydrogen atom pen jota 1, helium pen 2, lithium pen 3. Similarly, Vn is equal to z square by 2n h epsilon naught, jar numerical formula है 2.2 into 10 by 6 meter per second into z by n, and similarly for En है minus z square me4 divided by 8 epsilon naught square n square h rho square, which is equal to minus 13.6 ev z square by n square. Okay, and ground state energy is minus 13.6 ev, and n1 ପାଇଁ ଆଉ hydrogen ପାଇଁ ଯଦି ବାହାର କରିବ minus 13.6 ev ବାହାରିବ, जोटा ground state energy of hydrogen atom. Okay, similarly Tn, so time period, तो formula है 4 epsilon naught square nq hq divided by z square me4, so that is तार numerical formula 1.5 into 10 power minus 16 second nq by z square. Fn है just reciprocal of it, so that will be z square me4 divided by 4 epsilon naught square nq hq, and तार numerical formula 6.6 into 10 power 15 hertz z square by nq. ये frequency रा unit हवा hertz, ये time period रा unit हवा second. Okay, n है again n atomic number. So apart from that, sometimes they ask about current. Okay, if electron revolving in a orbit, they must have also current, because flow of charge is called current. So while doing the current problem, we can use the following formula, that is your current is nothing but your q by t, that is Tn. Q means your here is electron, as electron is revolving, because orbit रे के बोले electron बोले एटी कौन था न्यूक्लियस था, so बोलू ची के electron, so electron बोलू ची माने एटी चार्ज के E, और time period must थी वो Tn. Okay, so we can easily write current I is equal to 1 by time period 2 हम कौन लिखिवा Fn. So this is also a important formula while dealing with the current. So if somebody asks find the current in any nth orbit, you can apply this formula, I is equal to EFN. Okay, and you already know the formula of Fn. Okay, or you can apply this formula also, E by Tn. You already know the formula of Tn. You can easily calculate the I means here current. Unit hava tamara ampere. Okay, unit hava tamara gonna ampere. This is also sometimes they ask find the current in different orbits. You can easily calculate by this formula. That's it. Last video रे हम discuss करते ले different parameter formula, that is Rn, Vn, En, Tn and Fn, that is radius of nth orbit, velocity of nth orbit, energy of nth orbit, time period of nth orbit and frequency of nth orbit. आज हम डिस्कस करिवा ये जो Rn, Vn, En को हमें आ गोटे डिफरेंट फॉर्म जोटा इन टर्म्स ऑफ आल्फा माने इंडी है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. बेले बेले क्वेश्चन पचारे आल्फा देकी तुमको Rn, Vn, En पचारथिबो. आल्फा माने फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कोन? इट इज द रेशियो बिटवीन V1 एंड C. V1 है वेलोसिटी ऑफ फास्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जार वैल्यू है 1/137. सो आल्फा देकी तुमको जदी Rn, Vn, En पचारिबो तुम केमती से टाइप रे प्रॉब्लम करिवो. So Rn रो in terms of alpha रो formula है n square h divided by 2 pi z mc alpha, where n है orbit number, z है atomic number, alpha है fine structure constant. So it है Rn in terms of alpha. Vn रो in terms of alpha है zc alpha by n. So Vn रो formula है zc alpha by n. Rn पाई गलो, Vn पाई गलो. Next है En.
सो बिफोर गोइंग टू ईएन तुम किसी जिन जाना दरकार जे टोटल एनर्जी जब जानिछ काइनेटिक एनर्जी तुम पाई परिबो टी माने टोटल एनर्जी रिमेंबर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भितर रिलेशन है टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू कैन सी द फॉर्मूला रू ही डिराइव होती टोटल एनर्जी फॉर्मूला देख दियो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला देख दियो तुम जान पार टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी आ गोटे है पोटेंशियल एनर्जी है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी को केबे ईएन लिखा जाए केबे टी लिखा जाए आ सब रिलेशन साटिस्फाई हो मन रख टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो जेहेतु आम जानले जे टोटल एनर्जी को आम लिख पार माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो ये आम से करचे टोटल एनर्जी माने ईएन को आम लिख पार माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माने कौन हाफ एम वी स्क्वायर सो माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर माने वी एन स्क्वायर सो माइनस हाफ एम रहा वी एन स्क्वायर जगह आम जेड सी अल्फा बाय एन स्क्वायर लिख पार कहीं वी एनटा है जेड सी अल्फा बाय एन सो ताले फाइनाली आम आर एन वी एन आउ ईएन इन टर्म्स ऑफ अल्फा पाइले जोटा कह जाए फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट सो आर एन वी एन ईएन को इन टर्म्स ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी आम फॉर्म रे रिप्रेजेंट कर पारिबा जोटा भी तुम देखो एसएलआर बुक रे भी रिलेटेड प्रोब्लेम थी जो आर एन वी एन ईएन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा रे दे आस्क सम क्वेश्चंस ओके सो एतिकी फॉर्मूला अच्छे बहुत सार्टमेंट मॉडल थैंक यू।